Good evening, everyone. Quick audio check before we begin. Am I audible to everybody? Yes. Let's just see a yes in the chat box. Good evening, Prashant. Good evening, Sanchari. Am I audible, visible, clear to everybody? Yes? Okay. Hello, Hasika. Hi, Tanisha. Good evening. Hasika, I'm good. It seems that you can hear me and see me. That's why you're telling me. Okay. How am I doing? I'm doing great. Hi, Tanisha. Good. Okay. Chalo. Great. Then let's begin. Today's session, as it is visible on your screens, it is going to be about patents, right? So today, specifically, we are going to, in fact, wind up our session on intellectual property rights. This is our third session on intellectual property rights. We've had 2 sessions before as well. There was a session which was the introductory session on intellectual property that we did 2 weeks back. These are Thursday to Thursday miscellaneous law sessions. I hope everybody remembers, and somebody who's new and who's viewing this video for the first time, let me give you a brief intro on what we are doing. I'm Neha, and we at Clat Possible here, came up with this thought that maybe, preparing for this section of the CLAT, that's your miscellaneous law section, becomes a little cumbersome कि भाई कहाँ से material लिया जाए, कहाँ से क्या पढ़े. You are a little confused as to how to go about, preparing for this section. So we've come up with this entire series on miscellaneous laws. We've had a lot of sessions before. हमने इससे पहले environmental law, family law cover करा हुआ है. These are Thursday to Thursday sessions. Those links are available in the description box below with this video. So if you feel like you want to know what we did in the previous sessions, you can always go back and check out those videos, right? So let's start with today's session. Ye wala jo hamara session hai, that is specifically on patents. Isse pehle, if you have seen the videos, and those of you who are here with me, I know Sindhija, Hasika, Tanisha, all these people have been with me throughout our journey, तो उनको पता है कि हमने अभी तक IPR में हमने सबसे पहले copyrights किया, then we did trademarks, then we did geographical indications, so major chunk of IPR we are done with, and today we are going to do something which is very, very important, that is your patents, right? So let's begin. Hello, yes, Hogwarts. Okay, who is this Lion of Hogwarts? Hey, I like the name. I'm just re-watching the entire Harry Potter series again nowadays. And in fact, I'm even watching the Dumbledore, the new one, which has come in. It's really nice. So, okay. So yes, Hogwarts it is. Chalo, great. Let's start with patents. Ab patent, say, when you look at patent law, patents are something which are a little different from, what we did under IPR till now. What we have done in IPR till now, like I just mentioned, is we did the concept of copyrights, right? We did the concept of copyright. We did the concept of trademark, and we did the concept of geographical indications. Now, in all these 3 concepts, is registration ever compulsory? कि भाई अगर आपको कॉपीराइट, आप लिटरेरी आर्टिस्टिक राइट्स की बात करते हो, या आप अपने ट्रेडमार्क की बात करते हो, आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करते हो, वहां इज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी? that you will get protection. आपको अपने ट्रेडमार्क, जैसे ये क्लैट पॉसिबल का जो ट्रेडमार्क है, इसका प्रोटेक्शन हमें कब मिलेगा? जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे. या मैंने कोई किताब लिखी है और मेरे को कॉपीराइट प्रोटेक्शन मेरी लिटरेरी वर्क का कब मिलेगा? जब मैं उसको रजिस्टर करवाऊं. नो, राइट? रजिस्ट्रेशन इज नेवर कंपल्सरी. Whether you register it or you don't register it, you still get protection. Of course, there is a difference in the type of protection you get. Anybody remembers what is the difference in the type of protection? जब हम बात करते हैं भाई, अगर आपने रजिस्टर कराया और ना रजिस्टर कराया हो,
If it's registered, not registered, is there any difference in the kind of protection you get? Or is the protection also the same? Quick, can anybody help me out? सेम रहेगा, चाहे आप रजिस्टर करवाओ तब भी वही प्रोटेक्शन मिलेगा, द सेम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. और अगर आप रजिस्टर करवा लोगे अपना ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और द जीआई, एंड यू गेट अ सिमिलर प्रोटेक्शन, it is different, right? Okay, yes, Sindhja is telling me it is different. Hasika, Sindhja, yes, they're helping me out. They're telling me, yes ma'am, they're different. भाई अगर आप registered हो तो फिर आप infringement का केस डालते हो, but अगर आप registered नहीं हो तो आप फिर passing off का केस डालते हो, which is generally when you're talking about a common law remedy. ठीक, very good, good that you guys remembered. अच्छा, पर जब हम पेटेंट की बात करते हैं, पेटेंट, एवरीबडी नोस कि पेटेंट में एक चीज तो होती है हमेशा कि पेटेंट जो है ये इन्वेंशन से रिलेटेड है. सो यू नो फॉर श्योर दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट्स वी आर रेफरिंग टू an invention. I think जब भी पेटेंट की बात है, that's the first thing that comes to your mind, that okay, it is giving you protection. What kind of protection? To your invention. And the important thing about the protection which you get in the form of a patent is that it is a statutory right. Meaning thereby कि ये जो राइट है आपका, ये तभी क्रिएट होगा जब आप इसको रजिस्टर करवाओगे. That means this is very different from when you're talking about copyright, trademarks or a GI. Because यहाँ पे in these three, whether you get it registered, you don't get it registered, does not matter. Whereas when we are talking about patents, in patents, this is a right which is created because of the fact that you have got your patent registered, right? So this is a statutory right. It is a right which is created by the government. ये government आपको right देती है. किस टाइप का right? Right that अगर आपने कोई नई invention करी है, we will do that. Okay, what is it that you will need if you want to see कि यहाँ invention आपका patentable है या नहीं? We will do that in a bit. But generally, when you've created something new, आपने कुछ नया invent करा है, that is the time where if you want, you can seek from the government the exclusive rights over that particular invention of yours, right? So the exclusive right aapka to make, use, sell, import, all those things can be there when you're looking at an invention, right? So all these rights, chahe it relates to a product, process, all those things we will discuss in detail. But important cheez ye hai yahan pe ki ye statutory right hai. This right is not does not come to you naturally कि भाई आपने अपना कोई चीज क्रिएट करी और आपको नेचुरली वो राइट मिल गया. दैट इज नॉट देयर. रजिस्ट्रेशन हैज टू बी देयर. रजिस्ट्रेशन therefore here is compulsory, right? So this is something which is very, very crucial, which you have to remember, that when you are looking at patents, in patents your registration has to be compulsory, right? Okay. Now, if you look at historically, ये patent word कहाँ से आया है? It's a Latin word called patere, right? So paterage is to lay open, so to make available for public inspection. Patent is a very old concept, it's been there for centuries. It is just that in the modern times, उसको ज़्यादा एक form, it's got a different form. Otherwise, the concept of exclusive right of person who's invented something has been around for a long time, right? Okay. Now, what is the purpose? अब ये हो गया हमारा patent क्या है, but why do we need the concept of patent? The basic reason when you're looking at the concept of patent is generally we see that it is to encourage innovation, right? It is this concept कि अगर आप चाहते हो कि innovation हो science में, you would want new things to be created. You would want people to spend money on creating something new. Now, why would anybody spend money if there is no return, right? तो वो return कैसे मिलेगा आपको? Because of exclusive usage, right? तो अगर आपको आपकी invention पे patent मिलेगा, that means you will have an exclusive right to use that particular thing.
अगर आपका exclusive right नहीं है, then anybody can use it. So why would I, work hard and create something new? The only reason I'm going to work hard and create something new is because I know I'll earn something from it, right? So when you're getting to earn something from it, that is when the concept of patent comes in, right? So to encourage innovation, so that there is a disclosure of details of new invention also. Because sometimes what happens is, one part is you want to encourage innovations. The other part is if the protection of patent is not given, would anybody like to disclose whatever he has invented? Because he'll fear always कि मैंने बना दिया है, जैसे किसी को पता चलेगा, they'll start copying it, right? So there is that fear also which is created, right? So it says that is why, what is written here is maybe the inventors may be hesitant to publicize their creation कि कोई copy कर लेगा बोल के, right? So in order to incentivize this, in order to ensure कि लोग जो हैं आपका they actually come out and are ready to share their invention, that you have the concept of patents coming in, right? So important thing is that there is a temporary monopoly on its use. That means when we are talking of patents is also for a certain specific period of time. Anybody has any idea कि भाई ये patents का temporary monopoly का period क्या होता है? कि ये जो आपका exclusive usage है कि इतने ही टाइम के लिए आपको exclusive right to use मिलेगा, उसके बाद आपका right खत्म हो जाएगा. That's going to be the duration of holding your patent. Anybody has any clue? What is the duration of holding a patent? कितना होता है टाइम पीरियड कि जब आप Hasika is telling me 10 years. No, it's more than that. The duration of patent is Sindhuja, no, it's 20 years. Good, Tanisha. Duration for patent is 20 years, right? So once you get a patent, it's there with you for good 20 years, right? So 20 years तक आपके पास exclusive right होता है patent का, right? So far as India is concerned, हमारा Patent Act 1970 is the one which tells us कि ये 20 years का time period है. Good, Anandi. Aridhima, Chahat, you said 10 to 15, nahi bacha, Anandi 20, Aridhima 20. Good. That's exactly the time period when we are looking at protection granted under the Patent Act of 1970. Isme amendment हुए 2005 तक, in fact 99, 2000, there were these couple of amendments which happened because of, yes, हम काफी बार TRIPS के बारे में हम बात कर चुके हैं. So I'm hoping everybody remembers TRIPS. Yes, that was the International Treaty on Intellectual Property, जिसकी वजह से इंडिया के जितने भी IPR related laws हैं, सब में हमने amendments करे. चाहे वो trademark हो, copyright हो, GI का तो law ही create हुआ because of TRIPS, right? So even the Patent Act was amended as per our, responsibilities, obligations under the TRIPS agreement, right? So this was a brief background. Now let's move on. When you talk of patents, अब आपको patent के लिए apply करना है. Let's say you have a product and you want to apply for patent. So there is this basic criteria which is given under the act which has to be met with. अगर ये आप criteria meet करोगे तभी आपको patent मिलेगा, right? So let's see what the criteria is. Now the first important step which has to be is the idea has to be novel. Novel means that the idea has to be something which is new. ऐसा नहीं है कि कोई पुराना आइडिया है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते, right? So here when you're talking about novelty is something which is new. Okay. Anadi, good bacha, you got it right. She gave me the, the full form of TRIPS. That's nice. Good to see that. Okay. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं novelty की. तो जब हम novelty की बात करते हैं, novelty here is in the sense that it is new. And how do you check it? You check it by saying that it should not be published or used anywhere in the world, right? So patent, like all other IPRs, जो protection generally grant करी जाती है, that is not just protection which is
very, very limited to territorial, which is territorial in nature. Of course, अगर आप इंडियन पेटेंट लॉ के अंडर आपको पेटेंट मिल रहा है, तो द प्रोटेक्शन इज ओनली फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं कि अगर आपको इंडिया में पेटेंट मिल गया है तो वो ही पेटेंट लेके आप यूएस में भी जा सकते हो. नो, यूएस में आपको अपना अलग पेटेंट करवाना पड़ेगा. बट देन अगर यूएस में इस चीज के लिए ऑलरेडी पेटेंट ग्रांट हो चुका है, then you will not be granted a patent for the same thing in India. That is why when you're saying it should be novel, novel means कि कहीं भी world over वो चीज use नहीं हुई है, या ना use हुई है, ना ही उसके बारे में कोई publication है. So if there is a publication, it has been used anywhere else in the world, then you will not be given a patent. Okay. Next is, it says, must involve an inventive step. अब ये चीज कहाँ आती है जब हम बात करते हैं that you are seeking a patent over something which already exists, right? तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है मे बी, या कोई प्रोसेस है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वहां पे आप फिर से पेटेंट चाहते हो. सो देयर व्हेन यू आर सीकिंग अ पेटेंट, इट माइट नॉट बी कंप्लीटली न्यू, बट वहां पे आपने कोई ऐसा एक इन्वेंटिव स्टेप क्रिएट करा है जो कि बिल्कुल न्यू है, राइट? जहां पे यू कैन सी देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट which is there. There has to be a clear cut advancement. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर दिया है and you get a patent. No, you can't do that. You will have to show that there was a clear cut, आपने actually कोई बड़ा step लिया है. and जब आप ये technological advancement देखते हो, इसका इनफैक्ट इकोनॉमिक आउटकम भी होता है कई बार जिसको कंसिडर किया जाता है. जस्ट इन केस यू आर आप नॉर्मली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर पेटेंट, देन यू आर लुकिंग एट, यू आर अप्लाइंग टू द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, राइट? तो आप कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स इज द अथॉरिटी जो कि पेटेंट लॉ के अंडर क्रिएट करा गया है इंडिया में. एंड जब आप कंट्रोलर के पास अप्लाई कर रहे हो पेटेंट के लिए, तो वहां पे आप दिखाओगे कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसकी वजह से इकोनॉमिकली भी आपको इतना फर्क पड़ रहा है. Right, so both these things, so the economic increase or economic benefit जो है वो आपके technological advancement को kind of support करेगा, कि आप prove कर सकते हो कि भाई देखो ये इतना ज्यादा important, ये change किया है मैंने technology में इसकी, जिसकी वजह से मुझे money wise monetarily भी इतना ज्यादा benefit हो रहा है. Right, so this economic benefit will actually help you in establishing the technical advancement, right? Because end of the day जब हम पेटेंट्स की बात करते हैं, पेटेंट्स का बेसिक पर्पस ही यही होता है, आईपीआर का बेसिक पर्पस ही ये होता है प्रॉपर्टी क्रिएट करना, राइट? यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिवाइजेशन जो कि होता है जब आप पेटेंट्स की बात करते हो, राइट? Okay, now Chahat has a question here. I'll just take it up. Chahat is saying, ma'am, if a patent is granted, but afterward it is found that the idea already existed, is there any fine or consequences? See, if it is seen that a patent has already been granted, then your patent would be cancelled. There would be a revocation of the patent. If, let's say, patent was granted to you, later on it is found out, somebody files a complaint that boss, this patent has been granted incorrectly because it was already somebody else had this idea or something like that, then in that case there can be a revocation of the patent, right? So a patent can be revoked, right? So your whatever exclusive rights that you had got, they would get cancelled. Okay, next is the third thing when you're talking about criteria of patentability is capable of industrial application. Now, when you're talking about capable of industrial application, what this refers to is that, okay, fine, you've made something very new, or you've created an inventive step in something which already exists, but is it of any use? I'm like, fine, you've maybe there is an app already which is existing and you added one more step to it. But is it really serving any purpose? Finally, जो आपने achieve करना है उसमें कुछ add on यहाँ पे हो रहा है because of this new thing that you've created, this new step that you've created, or let's say you've invented something really cool, but उसका कोई industrial application, उसका कोई use possible है क्या? अगर उसका use possible है, only then would you get a patent over it.
राइट. अगर उसका यूज पॉसिबल नहीं है देन यू विल नॉट गेट अ पेटेंट ओवर इट. राइट. अगर आपने मान लो कोई किसी somebody created a new type of fan, let's say, right, but that fan just does not really work, like it goes round and round, but ना वो हवा देता है ना वो exhaust की तरह काम करता है. It looks really pretty, you know, the way it goes round and round, but does not really serve any purpose. If it does not really serve any purpose, तो फिर आपको उसको उसके लिए पेटेंट नहीं मिल सकता. Right. So whenever you're looking at patent, not only novelty, but कोई यूज उसका है क्या? इज इट ऑफ एनी यूज? इज देयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन व्हिच इज पॉसिबल? If it is possible, only then you are going to get patent over it, not otherwise. Right. So these are three things which have to be there. If all of them are there, only then you will get a patent. Right. तो या फिर novel है या inventive step है, and इन दोनों में से एक है, प्लस जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. इफ दीज थ्री थिंग्स आर देयर देन देयर इज गोइंग टू यू विल गेट अ पेटेंट. बट अब इसमें एक और चीज आती है. हमारा जो पेटेंट लॉ है वो कुछ चीजों को एक्सक्लूड करता है फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी. अब कुछ चीजें वेरी स्पेसिफिकली हैव बीन मेंशन्ड इन द एक्ट कि भाई अगर 1 2 3 4 देयर आर गुड सम 8-10 ग्राउंड्स आर गिवन कि अगर आप इन चीजों में इन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो फिर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. राइट. सो दे हैव बीन स्पेसिफिकली गिवन इन द एक्ट itself. I have mentioned a few because normally अगर एग्जाम में आपके पैसेज में आता है then with whatever is given कि भाई ये सब एक्सक्लूड किया है then obviously you will your answer will accordingly vary कि भाई वहां पे आपको पेटेंट नहीं मिल सकता even though वो नॉवल है, even though उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. फिर भी अगर let's say for example if the primary goal is that it should be contrary, use is contrary to law, morality or injurious to public health. राइट. तो अगर आपने कोई मान लो नया टाइप का क्या बोलते हैं इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस क्रिएट किया, ठीक है, आपने कोई नया टाइप का ड्रग्स जो ड्रग अब्यूज वाला ड्रग जो है वो आपने कोई क्रिएट किया, राइट. तो वो बहुत नोवल है, you know, it's something very very new. और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है because all the drug addicts they really like, you know, they are so used to the same drugs that they've got bored, you know, so they want something new for their whatever their rave parties and stuff like that. तो उनको कुछ नया चाहिए एंड वो चीज आपने नई क्रिएट करी है तो वो नॉवल भी है और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका यूज भी है. बट ये यूज जो है ये कैसा है? दिस इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, right? This is something which is injurious to public health, right? तो ऐसी चीज के लिए आप जो है you cannot get a patent, right? So that is something which has been exclusively specifically excluded from being patentable, right? Next is yes, Tanisha, we are saying like they cannot have a patent over it. So even though ऊपर 1 and 2 कैटेगरी में सब कुछ फिट आ गए फिर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. Similarly, when you talking about a method of agriculture, horticulture, तो यहाँ पे भी आपको पेटेंट नहीं मिलता है. Inventions relating to atomic energy, again you will not get a patent over it. Any process which is medicinal, surgical, any kind of things for treatment of animals or people or human beings, again these are kind of things जहाँ पे आपको पेटेंट नहीं मिलता है, right? So you're talking about a process of medicinal process or a surgical process, right? You're not talking about a medicine. ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ये बात कर रहा है कि सर्जरी कोई नया प्रोसेस है. देयर इज सम न्यू वे ऑफ डूइंग अ सर्जरी. यू इन्वेंटेड अ न्यू वे इन विच यू नो यू कैन मे बी रिमूव अ ट्यूमर फ्रॉम द ब्रेन, राइट? आप बहुत बड़े न्यूरोसर्जन हो और आपने कोई नया एक तरीका क्रिएट किया है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज बहुत जल्दी से आप किसी का ट्यूमर उसके स्कल से रिमूव, उसके ब्रेन से रिमूव कर सको. सो बट दैट entire procedure is something, despite of the fact that it is new, despite of the fact that it has industrial application, you know, people suffering from such a tumor they can use it. उसका industrial application भी है, वो new भी है, but still आपको उस process के लिए patent नहीं मिलेगा because that has been specifically excluded, right? So like this there are various other things जो कि exclude करे गए हैं from the criteria of being patentable. Okay, so this is something you will have to be very careful when you look at कि अगर आपका passage आया है
तो आपने ये चेक करना है कि भाई कौन से वाला ग्राउंड दिया है एक्सक्लूड करने के, राइट? सो बेसिक आइडिया, व्हेन यू इफ यू गेट अ पैसेज ऑन पेटेंट, यू चेक that okay, these three things are important if you want to get it patented, and also check what does the passage talk about when it's speaking of कि कौन से patent आप नहीं कर सकते हो, right? So those are your separate grounds. I hope this much is clear. किसी को कोई doubt है, so you can always put it in the chat box. It's right there in front of me. Okay, so let's move on. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे a while back, we were talking about the term of patent, right? I was telling you guys that 20 years is the time period for which you get protection. अब ये 20 years कब से शुरू होता है? From the date of filing, right? So always remember ये date of filing से 20 years शुरू होता है, not from the date when the patent was actually granted, right? So maybe आपने फाइल तो 2020 में करा है, पर आपको ग्रांट 2022 में हुआ, तो आपके जो 20 इयर्स का प्रोटेक्शन है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम विच ईयर? फ्रॉम 2020 और 22? यस, तो कौन सा होगा, 20 और 22? 20, right? So from 2020 they will count 20 years, so till 2040 is when you would be given protection, right? एक बार ये 20 years खत्म हो जाते हैं, then it becomes off patent. Off patent means now that particular technology जिसके ऊपर आपने पेटेंट लिया हुआ था, that is now open to general public and everybody can use it, right? So now you do not have any exclusive right over it. तो अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है तो 20 years तक तो आपको पेटेंट मिलेगा, 20 years के बाद जो है वो जनरल पब्लिक डोमेन में चला जाएगा. सो एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैन एक्चुअली मेक or generate or create or produce that particular medicine, right? अब यहाँ पे आता है concept evergreening of patents का. The entire globally, everybody is trying to fight this demon of evergreening of patents. This is especially being done by pharmaceutical industry. वो क्या ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा ट्वीक करेंगे अपने फॉर्मूले में रिगार्डिंग दैट मेडिसिन एंड दे वुड रीअप्लाई फॉर पेटेंट. तो मान लो 20 साल होने वाले हैं और आपका जो पेटेंट है वो खत्म होने वाला है, टर्म जो आपको पेटेंट के में मिला है. सो व्हाट डू दे ट्राई टू डू? दे विल मेक सम टाइनी एडजस्टमेंट, some minute change they will make to the product या process जो भी उन्होंने पेटेंट करा हुआ है, and they would apply for a fresh patent so that जो उनका protection 20 years का है वो और लंबा हो जाए. So in effect, what are you trying to do? You will try to keep on having one patent after another over that particular technology of yours, ताकि वो कभी public domain में आए ना, and you always have an exclusive right over it. Right? So this is the concept of evergreening of patents, wherein you try to continue to have that exclusive right of usage, which normally a patent gives to you. Right? So this is what is known as evergreening, and evergreening is something which is forbidden or being prohibited globally. कोई भी नहीं चाहता कि evergreening generally हो, but of course the pharmaceutical industry, not to ensure that उनके profits बने रहे, they are the ones who really want it. Right? Acha, there was one question by Sindhuja. I'll just going back to that. Ma'am, if passage on patent doesn't mention in what all is to be excluded, we won't apply our knowledge? No. अगर exclusion के बारे में कुछ नहीं दिया है, if the passage is only talking about the criteria, the first three things that we talk about, novelty, inventive step, and the third one was industrial application. अगर आपका passage सिर्फ इन तीन चीजों के बारे में, अगर आपका passage बात नहीं कर रहा है exclusion वाले clause की, then you would not go there, right? Do not go there. Do not apply your prior knowledge. ये तो हमेशा है. This is something which is across the board. You have to remember कि भैया prior knowledge हमने कभी नहीं लगानी है. Passage में जो दिया है, that is what we stick to. ठीक है? That is why मैंने यहाँ पे सिर्फ examples रखे थे आपके exclusion वाले clause के. बहुत सारे और भी हैं इसमें, है ना? तो वो आप डिपेंड करता है आपको कौन सा आता है. अगर कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी नहीं अप्लाई करोगे. ठीक, चलो, now let's move on. अब यहाँ पे एक और चीज है,
that when you are talking about patents, patent is supposed to be a territorial right. This is something which we discussed a while back also, कि patent आपको उसी country में जहां पे आप apply कर रहे हो, only that country you will get the protection. Which means अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, आपने इंडिया में उसका पेटेंट अप्लाई कर दिया, आपने बाहर कहीं अप्लाई नहीं करा, बट किसी फॉरेन कंट्री में कोई और सेम आपकी टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट अप्लाई कर देता है, right? So there you're not going to get protection because you will get protection only in your country. The way the world is today nowadays, that's something which is very dangerous, because the moment something new comes up, thanks to our internet devta jiska abhi aap fayda utha rahe ho, all this information gets dispersed instantaneously, and everybody across the globe will know that okay, this is the new technology which is coming, and anybody might try to take advantage. तो इसी चीज को combat करने के लिए we have this patent cooperation treaty, right? So patent cooperation treaty in 1970 में formalize किया गया था. India is a part of the patent cooperation treaty, wherein they have provided for filing of an international patent application, which means that there are about 153 approximately countries who are part of the patent cooperation treaty. और ये सारी की सारी countries में, it depends upon whichever country you want to apply for a patent, आप अपने domestic country में, जैसे आपको इंडिया में पेटेंट के लिए अप्लाई करना, आप इंडिया में तो कर ही सकते हो, but because of this PCT you can even apply to other countries जहां आपको लगता है आपको पेटेंट की प्रोटेक्शन चाहिए, right? So through this PCT you can actually apply for simultaneously to a large number of countries, right, by filing an international patent application. Now इसमें होता क्या है कि एप्लीकेशन आपका कॉमन है, right? So maybe you can apply to, let's say 50 countries you chose, आपने 50 countries में अप्लाई कर दिया, but does it mean कि आपको 50 countries में पेटेंट ग्रांट हो गया because of this treaty? नहीं, it is only application which this treaty provides. उसके बाद discretion होगा of individual patent office, which means every country will decide as per its own terms and conditions, that's as per its own rules and regulations, its laws, कि भाई आपको पेटेंट यहाँ ग्रांट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, right? So PCT is basically providing you a filing mechanism, right? यहाँ पे filing mechanism होता है. PCT का मतलब ये नहीं है कि आपको पेटेंट मिल जाएगा. पेटेंट जो है उस कंट्री की लॉज गवर्न करेंगी एंड उस कंट्री की लॉज के हिसाब से आपको पेटेंट मिलेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स यू थिंक दैट पीसीटी यू अप्लाई एंड यू गेट अ पेटेंट. यू डोंट गेट अ पेटेंट, इट इज ओनली अ फाइलिंग मैकेनिज्म. ओके, दिस इज समथिंग व्हिच यू कीप इन माइंड. ये कुछ चीजें होती हैं, द स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच यू कीप इन माइंड, बिकॉज इनके ऊपर पैसेजेस आते हैं, एंड पैसेज आते टाइम आपको ये नहीं स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको पेटेंट मिल जाएगा. नहीं, आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि आप फाइल कर सकते हो. Right? You can only file, then it depends upon the laws of that particular nation. ठीक? So this is regarding the terms of the patent. I hope everybody is clear. We'll move on. Everybody is clear? किसी कोई doubt? You can always put it in the chat box, like I keep saying again and again. चलो, अब हम move करते हैं. If everybody is okay, then we'll move on to the concept of what kind of patent can be granted. Under our Patent Act, we can get both a product patent as well as a process patent. तो आपको दो टाइप का पेटेंट मिल सकता है. आपको प्रोडक्ट पेटेंट भी मिल सकता है और आपको प्रोसेस पेटेंट भी मिल सकता है. अब ये प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में क्या फर्क होता है? When you look at the product patent is a patent which is on the product. जो फाइनल आपका आउटपुट है उसके ऊपर आपको जो है ये पेटेंट मिलता है, right? So this is on the final outcome which you will be getting the particular patent. Now whereas when you look at the process patent जो है वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे मिलता है, right? So here when you're talking of a product patent, आपने कोई, let's say you've created this particular new type of cell phone, right? आपने कोई ये नए टाइप का सेल फोन एक क्रिएट करा है.
इस सेलफोन के ऊपर अगर आपको प्रोडक्ट पेटेंट मिल जाता है, दैट मीन्स नोबडी कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय एनी प्रोसेस पॉसिबल। कोई भी प्रोसेस से ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट है, नोबडी कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दैट इज वाई जब हम प्रोडक्ट पेटेंट बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो ट्रू मोनोपोली राइट आपको क्रिएट करता है, ट्रू मोनोपोली राइट देता है इन्वेंटर को कि आपने ये प्रोडक्ट क्रिएट किया, कोई भी किसी भी तरीके से ये प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोसेस पेटेंट होता है, दैट विल प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो इस प्रोडक्ट को नहीं प्रोटेक्ट करेगा, बट इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो आपका XYZ जो ये स्टेप्स थे, दीज आर द वेरियस स्टेप्स जो आपने यूज करे टू रीच दिस प्रोडक्ट, दीज स्टेप्स आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। तो जब आप स्टेप्स को प्रोटेक्ट करते हो, सो वेयर डू यू थिंक विल बी बेटर प्रोटेक्शन? जहां आप प्रोसेस को प्रोटेक्ट करते हो या जहां आप प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हो? Where is it going to be, the protection going to be better? Is it on a product patent or is it on a process patent? Where is the protection going to be better? As the owner of a patent, where do you think you will be better protected? Product patent mein ya process patent mein? Process is this, when you're saying 1, 2, 3, 4, 5 steps are getting protected. एंड प्रोडक्ट इज व्हेन यू सेइंग ये प्रोडक्ट जो है ये कोई भी नहीं बना सकता। बॉस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट ऑल ऑफ यू आर इनकरेक्ट। बेटर प्रोटेक्शन हमेशा प्रोडक्ट पेटेंट का होता है, बिकॉज जब आपने प्रोडक्ट बना लिया है, मान लो मैंने लाइक आई वाज सेइंग मैंने ये फोन क्रिएट करा है, तो ये फोन एक बार मैंने क्रिएट कर लिया, आई हैव एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर दिस फोन, nobody can create this phone. On the other hand, अगर मैंने इसमें प्रोडक्ट पेटेंट नहीं लिया होता, मैंने प्रोसेस पेटेंट लिया होता कि XYZ ये प्रोसीजर था, इससे मैंने ये प्रोडक्ट क्रिएट किया है, आई वॉन्ट प्रोटेक्शन ओवर दिस प्रोसीजर ऑफ माइन, राइट? आई एम नॉट टेकिंग प्रोटेक्शन ओवर द प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा यहाँ पे भाई, जैसे ही ये मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, कोई रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएगा and he will find another way to create this product. तो वो XYZ से नहीं, वो PQR प्रोसेस यूज करके इन इफेक्ट वो इसी प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा। सो व्हाट आर यू सीइंग हियर, दैट आपका जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, राइट? सो हियर द प्रोटेक्शन बिकम्स अ लिटिल लिमिटेड व्हेन यू लुकिंग एट द प्रोसेस पेटेंट. Whereas in case of a product patent, there is more protection, right? Chahat is saying, ma'am, is there any specific term or is it different according to different countries? PCT, Patent Cooperation Treaty. But Patent Cooperation Treaty, to, it's an international agreement, right? It's an international agreement. 153 countries iska part hai. राइट? तो वो तो एक ही है, देयर इज दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, राइट? वो तो सेम रहेगा, ओके? पीसीटी इज कॉमन 150 कंट्रीज के लिए, दैट्स एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है? ओके, चलो, anyways, that was out of context. We were doing product and process, my bad. Okay, the product and process, I hope it is clear. I hope you guys understand reverse engineering. ये हम बहुत करते हैं, वी इंडियंस वी डू दिस अ लॉट, स्पेशली नॉर्मली भी। आपने कोई चीज, इनफैक्ट समथिंग लाइक योर मॉम गोज टू अ मिठाई की शॉप एंड शी ईट्स अ मिठाई, और शी गोज टू अ रेस्टोरेंट एंड शी ईट्स समथिंग एंड शी इज लाइक, oh, this is so yum, I can make it at home. And then she'll say, oh, I know this is how it must have been created. So what is she doing? She was doing reverse engineering, right? आप उल्टा जा रहे हो, आप पहले प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट को फिर आप मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस बना रहे हो। Yes, happens a lot, right? तो ये जब पूरा का पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, ये प्रोसेस पेटेंट जब आप लेते हो, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग को आप प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, बिकॉज यू ओनली have protection over the way you have created your product, and somebody else might create the same product with a different process, right? In our country, we have both.
प्रोडक्ट पेटेंट एज वेल एज प्रोसेस पेटेंट. सो इफ समबडी वांट्स कि मेरे को प्रोडक्ट पे पेटेंट चाहिए तो आपको प्रोडक्ट पे भी पेटेंट मिल सकता है, और चाहे तो आपको प्रोसेस के ऊपर भी पेटेंट मिल सकता है. इसमें technically there are certain variations which are there, like the law is specific कि भाई किस टाइप की चीजों पे आपको प्रोडक्ट पेटेंट मिलता है, किस टाइप की चीजों पे आपको प्रोसेस पेटेंट मिल सकता है. बट इन जनरल आवर कंट्री हैज बोथ काइंड्स ऑफ पेटेंट्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर प्रोडक्ट और टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, दोनों के ऊपर आपको पेटेंट मिल सकता है. राइट, लेट्स जस्ट लुक एट दीज पॉइंट्स वंस. Product patent में it says the grant of a product patent implies that no other person other than the inventor can manufacture the same product. Right, आप कोई using the same process or any other process. Right, तो यहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है आपको प्रोडक्ट की. प्रोसेस चाहे आपके वाला हो या कोई और हो, आप प्रोडक्ट जो है ये क्रिएट नहीं कर सकते. Second point here is talking about the true monopoly, which is correct because here आपको प्रोडक्ट के ऊपर complete monopoly मिलती है. Then it says product patents are considered higher level of protection as compared to process patents, because यहाँ पे ये true monopoly वाली बात हो रही है. Same process or the process does not matter. On the other hand, when you're talking about the process patent, here it is a limited kind of a protection that you get and gives a low range of protection, and there can be multiple process patents for a single product. This is interesting, which means कि इसी प्रोडक्ट के लिए XYZ प्रोसेस भी है, PQR प्रोसेस भी है, और कोई ABC प्रोसेस भी होगा. राइट, तो एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस पेटेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. राइट, सो ऑल दीज आर, in fact, when you look at it practically, an economy like ours, we always were in favor of process patents, because let's say there is a pharmaceutical company which creates a new medicine. Right, now here, if there is a product patent which comes, then that particular company would actually want a complete protection, and no other company, Indian pharma company, could actually create this medicine because आपका true monopoly मिला हुआ है. On the other hand, अगर इसमें प्रोडक्ट पेटेंट ना होता, इसमें प्रोसेस पेटेंट होता, तो भाई यहाँ पे मान लो ये वाली कंपनी XYZ प्रोसेस से इस मेडिसिन तक पहुंची है, कोई और कंपनी ABC प्रोसेस क्रिएट करके इस प्रोडक्ट तक पहुंच जाती. Right, so here there was more scope of people benefiting from the product, but despite the fact that we only wanted process because of TRIPS and other especially TRIPS and those international obligations that we have, तो हमें product patent we have to have product patent also. In fact, pharma में पहले we did not want product patent, we only wanted process patent, because हमारे ट्रिप्स की obligations आ रहा है, तो हमें बोला गया कि boss, no, you have to have product patent there. Right, so therefore यहाँ पे ये दोनों चीजें काम करती है. ठीक, so in our country we have both product as well as process patent. ठीक, चलो अब चलते हैं आगे. I hope everybody is clear, so we will move on forward. अब next, जब आप पेटेंट लॉ में देखते हो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एज टू हु इज द पेटेंटी. नाउ पेटेंटी वुड बी द पर्सन हु हैज बीन गिवन द पेटेंट. राइट, सो द पर्सन हु एट द टाइम बीइंग, जिसका नाम जो है रजिस्टर में एंटर्ड है एज द ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ द patent. Right, so the owner, basically what we're saying, the owner of that particular patent is known as the patentee. अब ये पेटेंटी क्या हमेशा इन्वेंटर होगा? Is it essential that always the inventor is going to be the owner of the patent or will be the patentee? Is that essential? या कोई ऐसा भी हो सकता है जो इन्वेंटर नहीं है पर वो ओनर है पेटेंट का? Is this possible that I am not invented that particular technology, that particular product or that particular process, but I'm still the owner of the patent? यूजुअली हम बोलते हैं कि इन्वेंटर का राइट होता है, पर इन्वेंटर को छोड़ के किसी और का भी राइट हो सकता है ओवर दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन. दिस इज वेरी सिमिलर. यस, सॉरी इज टेलिंग मी यस, दिस इज वेरी सिमिलर टू जब हम कॉपीराइट में बात करते हैं ऑथरशिप वर्सेस ओनरशिप की. ये
आईपीआर में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको कॉमन दिखेंगे अक्रॉस द बोर्ड। जब आप कॉपीराइट में बात करते हो ऑथरशिप वर्सेस ओनरशिप की, तो वहां क्या था कि भाई अगर आप ऑथर हो, you are the author of a particular literary work, let's see, will you always have a copyright over it? Not necessarily. There the ownership could be different. Like when we talk about कि भाई कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, आप किसी आईटी कंपनी के लिए काम करते हो, आपने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है कोई, तो जरूरी नहीं है कि आप ऑथर हो फिर भी आप ओनर हो। उसका कॉपीराइट जो है उस आईटी कंपनी का भी हो सकता है। सिमिलरली द सेम लॉजिक अप्लाइज इन पेटेंट्स ऑल्सो, right? So if I am an inventor, I could obviously go and apply for a patent. But if I am in the course of employment, right? Or if I am under a contract, then in that case, I may not be the inventor, but I might still be the owner, right? So if I have somebody working for me, I am providing him with all the things which are needed and everything, and during the course of employment जो है वो मेरे लिए उसने कुछ नई चीज create करी है, then I as an owner can, as an employee, will be the owner of that particular patent and not the actual inventor, right? तो चाहे ये कंपनी के मामले में बोलो कि भाई किसी कंपनी का पेटेंट है, या इंडिविजुअल भी हो सकता है। एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयर ऑल्सो आई कुड गेट अ पेटेंट एंड नॉट द इन्वेंटर इफ इट इज डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इन आइदर ऑफ द टू सिचुएशंस, कॉन्ट्रैक्ट में आप मेरे लिए काम कर रहे हो, मेरे लिए इन्वेंट कर रहे हो, तो मेरा पेटेंट होगा, आपका पेटेंट नहीं होगा। ठीक, वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट जब हमने ऑथरशिप एंड ओनरशिप किया था। ठीक, तो ये पेटेंटी कोई भी हो सकता है जो जिसका नाम जो है रजिस्टर पे लिखा हुआ है, who's the owner of the patent, right? Now there are certain rights which, because you're a patentee, you get. Now let's see what are these rights which you get as a patentee. Now it says a patentee has exclusive right. So this is again, you're looking at exclusive right to use, exercise, sell, distribute the patented article or substance, right? तो आपके पास exclusive right है to use, exercise, sell, distribute कर सकते हो आप अपना product को, या आप जो process है उसके लिए भी the same rights exist, right? So now this can be exercised either through himself, आप खुद ही सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, आपने कोई एजेंट रखा है, और यू हैव गिवन इट टू योर लाइसेंसी, right? So who is a licensee? Licensee is somebody who you have given the permission to use your patented technology. तो आपने कोई patented technology create करी है, अब end of the day this is how you will earn money. जब आप लाइसेंस देते हो किसी को तो आपको क्या मिलती हैं? रॉयल्टीज, right? This is how IPR is going to make you money, because you might not be manufacturing or producing something all on your own. अपने आप कर रहे हो is one thing, but a lot of times you will not do it on your own, but you rather let other people make use of that technology in return for some money, right? That is going to be your royalty. So that is when you're talking of granting of license, right? So the patentee has the discretion, obviously the owner का discretion होगा to transfer rights or grant licensing, right? तो ये कोई भी arrangement हो सकता है, license हो सकता है, आप transfer कर रहे हो किसी को, right? But important thing, whenever a license is given, this has to be in writing and registered, right? तो writing होना चाहिए, registered with the controller of patents. Only then will this license be valid, right? So it cannot be an oral license that I give you, okay, fine. Or even if it's a written document, I sign and give you a license in your name कि भाई आपको ये license दे दिया मैंने, but still it will not be a valid license. Valid license होने के लिए writing में होगा, and furthermore it has to be registered with the controller of patents, right? Registered hoga, only then it is going to be a valid license, right? So these are two rights of a patentee. There are two more which we have to do. Next right जो है आपका patentee का, वो है right to surrender. Now normally जब हम patents की बात कर रहे हैं, that is giving you the exclusive right, right? अब मान लो आप ने पेटेंट मिल गया है आपको, you have a particular patent, but now what do you want? You do not want this exclusive right. Let's say because of some reason you do not want it and you want to surrender it, you want to give it up. Basically surrender का मतलब करना है give up करना, right? So you are saying that I don't want to
continue with this right which I have, rather I want to give up this patent of mine. तो जब आप give up करते हो तो give up करने के लिए भी आपको notice of surrender देना पड़ेगा, right? So you will give a notice of surrender to anybody who's interested in that patent, right? It could be that maybe somebody else had also applied for a similar patent, या आप को पेटेंट ओनर हो इसके, तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है वहां पे उन सबको आप नोटिस दोगे, तो मे बी यू हैव अ को पेटेंट, दो लोगों ने, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी सिर्फ एक ही को पेटेंट मिल सकता है, टू पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई, यू कैन हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ को पेटेंटी ऑल्सो. तो मान लो ए एंड बी, both of them had applied for a particular patent, right? So let's say A wants to surrender it. तो ए जो है बी को नोटिस देगा कि बॉस मैं सरेंडर कर रहा हूँ अपना पेटेंट, राइट? सो दैट बी कैन टेक स्टेप्स एंड नाउ ही विल बिकम द एक्सक्लूसिव पेटेंट होल्डर, राइट? सो समथिंग लाइक दिस, एनीबडी हु हैज एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द पेटेंट, एंड अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शंस है, कोई भी है, दे कैन ऑलवेज सेंड दोस आफ्टर दिस नोटिस ऑफ सरेंडर इज गिवन, राइट? एंड देयर आफ्टर इट ऑल्सो सेज दैट ये नोटिस एक बार आपने सरेंडर कर दिया है तो ये ऑफिशियल गेजेट में भी प्रिंट होगा, so that people who are interested, maybe आपने सरेंडर कर दिया है, there might be somebody else who wants a patent over it now, so they can apply after this, right? That is why वो notice में सबके आना जरूरी है. Okay, so that's another thing which you can do, and of course you can always sue for infringement, right? Here under patent law आप एक civil remedy के लिए अप्लाई कर सकते हो, अनलाइक ट्रेडमार्क एंड अनलाइक कॉपीराइट्स जहां पे आपका सिविल एंड क्रिमिनल दोनों रेमेडी था. फॉर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट व्हाट यू हैव इज अ सिविल रेमेडी, राइट? सो यू विल गेट द सेम मॉनेटरी रिलीफ्स, इंजंक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स यू गेट फॉर पेटेंट्स आल्सो. सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट यू फील ऑफ योर पेटेंट, आपने देखा कोई और आपकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और एनीथिंग लाइक दैट, देन यू कैन ऑलवेज गो इन फॉर अ सिविल remedy, right? So this is fairly simple when you talk of infringement. Okay, next चीज, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि important है when you look at patent law. First is the concept of compulsory licensing. ये जो compulsory licensing वाला concept है ना, this has been in news. Now compulsory licensing means that normally if I am the holder of a patent, only if I give a license can anybody manufacture it. Compulsory license बोलता है कि गवर्नमेंट जो है कंपल्सरी मेरे ऊपर कंपल्शन कर सकती है, that no, नेहा, you will have to give your patent, you will have to give a license to XYZ. तो ये होता है कंपल्सरी लाइसेंस. अगर गवर्नमेंट डंडा देगी और बोले कि बॉस तुम्हें देना पड़ेगा तो मुझे देना ही पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, राइट? सो हियर कैन एनीबडी टेल मी कंपल्सरी लाइसेंसिंग न्यूज में क्यों रहा है? किस वजह से ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग पिछले कुछ दिनों से, पास्ट ईयर एंड हाफ 2 years, दिस हैज बीन इन न्यूज, दिस कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट जो डंडा करेगी कि बॉस तुम्हें लाइसेंस देना पड़ेगा. एनीबडी हैज एनी क्लू किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में रहा है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग? गुड तनीषा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कोविड वैक्सीन वेवर, राइट? तो कोविड वैक्सीन वेवर की वजह से कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो लाइमलाइट में आया था, राइट? वाज कंपल्सरी लाइसेंसिंग गिवन सो फार एज आवर कंट्री वाज कंसर्न्ड? हमने दिया क्या कंपल्सरी लाइसेंसिंग कोविड वैक्सीन के लिए? डिड वी डू दैट? यस और नो? Not really, there were certain limitations which were put, but there was no compulsory licensing which was actually done. Compulsory licensing is that compulsorily, without giving royalties or maybe a certain royalty, you have to give a license to certain people to manufacture. But compulsory licensing actually was not something which was granted even during COVID times. In fact, you must have heard India and which other country went to WTO asking for a waiver of IPRs from COVID vaccines and COVID related other treatments. Yes, quickly tell me, India and which other country went to WTO seeking a waiver? कि भाई waiver हो जाना चाहिए. India and South Africa.
गुड तनिषा, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दोनों गए थे अक्टूबर 2020 में WTO के पास, ये बोल के कि बॉस इतना ज्यादा कोविड हो रहा है, वैक्सीन क्रिएट हो रहे हैं अभी, एंड द डेवलप्ड नेशंस विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द काइंड ऑफ IPR प्रोटेक्शन व्हिच इज गिवन टू देम, सो दे वांटेड कि भाई गुड सिंधुजा दैट ये जो IPR है इसका वेवर मिलना चाहिए, right? So there was a lot of opposition, obviously. All these big pharmaceutical companies, Pfizer, Moderna, ये लोग जितने भी बड़े बड़े थे, they never wanted any of this kind of waiver happening because they had put in so much of years of research and so much of money they had been put into it that they did not want a waiver. तभी वहां पे remember the first class of IPR जब हम बात कर रहे थे कि बैलेंस होना चाहिए कि IPR वाली राइट्स का एंड द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज पुट इन सो मच ऑफ money and time and everything in creating something new versus what the society needs, right? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं there was this dilemma which was happening जहाँ पे that this concept of compulsory licensing was also popping in time and again, but the waiver never really happened. WTO पे हम गए थे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बोलने की भाई जो ट्रिप्स के अंडर IPR का जो रेजीम है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो एंड जस्ट इंश्योर कि people actually get vaccines, the underdeveloped countries, the developing nations, they actually get the vaccines on time, because there was, in fact, if you look at the developed world, US or UK or Europe के पास तो इतने सारे इनके पास हो गए थे vaccines, they had like such a huge stock of vaccines, but the number of people were very less in comparison, right? So that is where they started pledging. तो वहां पे उन्होंने प्लेज करना शुरू करा था. There was this entire promise and pledge, and जो UN वालों ने मिलके कुछ ना कुछ एक अपना बनाया, and they said कि ठीक है, सबने कंट्रीज ने, डेवलप्ड नेशन ने प्लेज किया कि हम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को इतना इतना वैक्सीन दे देंगे, बट जो ट्रिप्स वाला वेवर था वो किसी ने कुछ नहीं किया. इनफैक्ट एनीबडी हैज एनी क्लू इसके बारे में कुछ लेटेस्ट हुआ है क्या? इस साल कुछ हुआ? ये तो अक्टूबर 2020 में अप्लाई किया था, उसके बाद अभी कुछ इसका आउटकम निकला क्या इस साल? Because then it becomes your current legal knowledge, your current legal affairs, CLA में आ जाता है आपका. Any clue? अभी कुछ recent में हुआ इसका? अभी मतलब this year, not very very recent as such. Yes, good. Good, Tanisha. The 12th WTO ministerial meeting that which happened in June 22. यहाँ पे हमारे आइडिया को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, राइट? मतलब ऑब्वियसली अब इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक पूरा सिनेरियो होता है, तो ऐसे आउटराइट कोई नहीं बोलेगा कि भाई जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो प्ली था उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बट उसको इतना उन्होंने वाटर डाउन कर दिया दैट इन इफेक्ट इट वाज नथिंग. इन इफेक्ट व्हाट दे सेड कि जैसे आप अपने टाइम पे अपने कंट्री वाइज कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर लो, बट ये जो ट्रिप्स को आप वेवर वूवर चाहते हो वो कुछ नहीं मिलेगा. सो इन इफेक्ट वी डिड नॉट रियली गेट एनीथिंग, but obviously if you read the fine print only, then you get to know it. Otherwise they'll try to obviously make it very nice and rosy कि भाई हमने आपकी बात मान ली है, but हमारी बात किसी ने मानी नहीं actually, right? So our this entire plea for waiver of IPR protection under TRIPS was rejected in effect, right? तो हुआ ये है, और ये क्योंकि नया है, this was the 12th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग जहां पे ये जो हमने अक्टूबर 22 में किया था, दिस फाइनली वाज कल्मिनेटेड इन जून 22. इसीलिए ये आप लोगों के करंट लीगल अफेयर्स का पार्ट बन जाता है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. दैट इज द रीजन आई वांटेड टू हैव दिस सेपरेट सेशन ऑन पेटेंट्स टुडे. आई एम hoping you getting the importance and relevance of patents, because अगर 2020 टाइप का अगर पेपर आता है आपको, तो लीगल जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें if they want a 2022 टाइप ऑफ अ पेपर, 21 और 22 में दो नहीं हुआ था, बट 2020 वाला जो क्लैट का पेपर था उसमें आपके काफी करंट लीगल अफेयर्स टाइप के पैसेजेस आए थे, राइट? सो यू नेवर नो कि जो 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 के पेपर में ये वाला टाइप का आएगा या ये वाला टाइप का आएगा, वी डू नॉट नो, राइट? सो समथिंग लाइक दिस बिकम्स रेलेवेंट, विच मीन्स जहां ये आ रहा है इससे इंपॉर्टेंट कोरिलेशन बनाएगा पेटेंट्स वाला लॉ.
right? So patents is something which is very, very important for you guys so far as miscellaneous laws is concerned, right? So I would recommend कि patents के concepts को अच्छे से समझो, ठीक? अच्छा, अब हमारा ये कंपल्सरी लाइसेंस का लॉ पेटेंट एक्ट में क्या बोलता है? You have section 84 and you have section 92. These are the two sections under the Indian Patent Act जो की बात करते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग की. ये क्या बात करते हैं? 84 तीन ग्राउंड देता है आपको जिनके ऊपर आपको कंपल्सरी लाइसेंस मिल सकता है. फर्स्ट, ओके, नाउ बट ऑफ कोर्स important part in 84, 3 years should have passed, right? 3 years should have passed from the time when then the grant of the license has happened. And then there are these three reasons. The first, it says, is requirement of the public with respect to patented invention, कि कोई public का requirement है इन्वेंशन से जो पूरा नहीं कर पा रहे. मान लो कोविड वैक्सीन का ही समझो कि जिस कंपनी के पास पेटेंट है, द नंबर ऑफ वैक्सीन विच वी नीड, उतनी वैक्सीन आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो सकती है, राइट? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक. सिमिलरली सेकेंड बात कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसिंग की, कि आप यू हैव द पेटेंट बट यू आर नॉट एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, तो अगेन जो है गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर सकती है. थर्ड इज व्हेन द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मे बी द वे आप उस इन्वेंशन को यूज कर रहे हो इंडियन कंडीशन में वो काम नहीं कर पा रही है. सो देयरफॉर यू आस्क द गवर्नमेंट कि भाई हम मुझे भी दे दो ये लाइसेंस, कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दो और लोगों को दो, सो दैट वी कैन एक्चुअली यूज दिस टेक्नोलॉजी द वे इट इज नीडेड इन आवर कंट्री, राइट? सो दोज आर द थ्री रीजंस जहां पे आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, right? So here, as an individual, you are asking for a compulsory license. On the other hand, ये section 92 जो है, ये बात करता है suo moto. कंट्रोलर जो है वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग ग्रांट करेगा. suo moto क्या होता है? What does the word suo moto mean? कई बार आप केसेस में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट केस करते हैं और वो suo moto करते हैं. So suo moto, what does suo moto, what does the word mean here? Generally very commonly occurring word, you see a lot of it in the newspapers also. Okay, Sindhuja is telling me take the matter, when the courts or somebody takes the matter on its own, right? आप अपने आप कोई केस लेते हो, किसी ने गुड तनिषा वॉलेंटरीली इंटरवीन कर रहे हो, वॉलेंटरी इंटरवेंशन हो रहा है, कोई केस नहीं फाइल कर रहा है, बट कंट्रोलर को खुद लग रहा है कि भाई इस केस में कंपल्सरी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, then in that case also there can be compulsory licensing. Normally ये कहाँ पे होता है? ये national emergency, extreme emergency, public non-commercial use. So these are the three grounds जहाँ पे आप compulsory licensing दे सकते हो, right? So normally if it's a sort of a license which is given, let's say मान लो, okay, I'm like, I don't want it to happen. I've been saying it for so many times now कि मान लो कोविड की एक और वेव आ जाती है, right? And then you realize that, and there is some drug which comes into the market which can actually control it, right? So I'm seeing something positive along with COVID, right? So I'm hoping कि दोनों चीजें भगवान सुन रहा है, मेरी एक ही बात ना सुन ले, right? तो यहाँ पे मान लो कोविड दोबारा आ गया एंड पर हमारे पास अभी इलाज भी आ गया है कोविड का, right? So what does the government see? Government sees कि बॉस इलाज तो फटाफट सबके पास होना चाहिए, right? So what does it do? There is an extreme urgency. So what do? You grant that license to a lot of people, right? So when you're granting that license to a lot of people, that is where compulsory licensing comes in, right? But of course, something which is very, very uncommon has happened, I think only once in our country. एक particular drug के बारे में हुआ था, ये एक ही बार हुआ है आज तक, and hasn't really happened because end of the day अगर आप compulsory licensing को popularize कर दो, common कर दोगे, तो फिर कोई innovate और करना ही नहीं चाहेगा. Why would anybody want to put in so much of time and energy and money in creating something new, right? So that is what compulsory licensing is about. In fact, जब WTO में भी ये मैटर चल रहा था एंड ये पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था, तब भी यही बोल रहे थे that when you are looking at the fact that अगर हम दे दें वेवर तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा. अच्छा इफेक्ट तो आप देख रहे हो कि भाई सबके पास दवाई आ जाएगी, एवरीबडी विल हैव द वैक्सीन, बट व्हाट वुड बी द साइड इफेक्ट?
The side effect would be of course, the सबसे known side effect is that nobody would want to innovate after that. All those people जो इतने सालों से technology develop कर रहे हैं, उसके बाद people next time if there is some new pandemic which starts, people or these pharma companies might not be as active or might not be giving their best in order to create something new because they don't see any incentive for them, right? That was one. And the second was कि अगर आप बहुत common कर दोगे, which is something जो कि compulsory licensing का हमेशा से एक बहुत बड़ा critique रहा है, is that when you are doing compulsory licensing, you do not know whether the person जिसको आप license grant कर रहे हो, he is actually capable of creating that same product. राइट तो आप वैक्सीन जो मान लो आप हर छोटी छोटी कंट्री को जहां पे आप सब जगह आपने लाइसेंस ग्रांट कर दिया कि भाई आप क्रिएट करो वैक्सीन, बट डू दे रियली हैव द कैपेबिलिटी, द नो हाउ टू क्रिएट दैट वैक्सीन? Do they have the machinery or the technology needed to create that vaccine? That is why जब यहाँ पे ट्रिप्स का वेवर का चल रहा था डिबेट, दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी वैक्सीन बनाने में, instead of it actually saving lives, you might end up taking more lives instead. And so there are a lot of pros and cons when you look at compulsory license. So this was one of the very good argument which was there against TRIPS waiver, right? Chalo, theek hai. That was another take on your compulsory licensing. Ab last हमारा concept बचा है इसमें, वो है आपका government use of patents का, right? So when you talk of government use of patents, it basically says that a patent invention may be used or acquired by the government, right? तो ये it is something not like compulsory licensing. Compulsory licensing में तो आप किसी और को license देते हो, ये सरकार अपने आप ही रख लेती है अपने पास, right? So if the government feels that this particular technology or whatever, the government needs to use it, so government will become the exclusive, maybe sometimes the user of that patented technology, right? So again, a little sort of a little harsh sort of a thing when you look at jisne create kara hai, but sometimes like we're talking about balancing the interest of the guy who has put in that much of effort, the patentee, and public good, right? So it could be that for some reason, maybe because of maybe it's a medicine or a drug, so the government would like that for distribution in their dispensary, hospitals, medical institutions run by the government or anybody, there you might want that these patented products should be used, right? This technology needs to be used, so there the government can intervene, right? So government intervene kar sakti hai, and government can take over that particular payment or patent or use that particular technology, right? It might also sell the patenting process on royalties depending, so all these rights the government has to do, right? So that is your government use of patents. Take. So okay, I think that's about it that we have today. Now, these are the most important features so far as patents are concerned for you guys, frankly. Otherwise, patents, there is a lot of info, on the internet. If you go, तुम लोग को process क्या होता है patent file करने का, उसमें objections क्या लगते हैं, there'll be so many things which you will see, right? But what we have covered in the session today is something which is really, really important, something which can actually feature in your exam, right? That is something which is very important. Abhi zyada time nahi bacha hai aapke exam mein. It is very, very important ki aap smartly padhai karo instead of, studying just everything under the sun, right? So I'm hoping today's session was useful. There's one doubt by Hasika. She's saying, ma'am, can you please, in short, once tell what is compulsory licensing? Boss, compulsory licensing is very simple. It is basically the government can make you give your license to somebody. Otherwise, normally, अगर मेरा patent है, तो मेरे को जिसको देना है license, whoever I want to give the license to, मुझे जिसको देना है, I'll give it to that person, right? I have a choice because it's mine. On the other hand, जब compulsory licensing आ जाता है, तो government बोलती है कि boss तुम्हें इसको license देना पड़ेगा, right? So when you are compulsorily made to give your license to somebody, right, then that is what is compulsory licensing, right? So that's the basic premise of that concept. ठीक, चलो, I'm
hoping that you guys are clear with the concept, and hope to see you next week. Now, with this, we've come to an end so far as your intellectual property rights are concerned. Major जो important chunk है IPR का जिसके ऊपर questions बनते हैं, we have covered all those aspects. ठीक है? Next session, we're going to do something fresh, कुछ नया करेंगे. IPR आपका अब खत्म हो गया. ठीक? Chalo then everybody, and those of you who are new to this particular channel, we are an organization called Clat Possible. We help you in your prep for your Clat and all the other law school entrance exam, undergrad courses, not post-graduation courses. Somebody one day asked me, ma'am, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाते हो? नहीं बॉस, हम अंडर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाते हैं. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अंडरग्रेड कोर्स एंड यू वांट सम हेल्प, वी आर हियर. वी प्रोवाइड यू मेंटोरशिप. वी हैव physical classes, online, offline classes. We have various mock series, workbooks, and we have a various, a huge bouquet of products that we offer. So if you feel that you need any help in your prep, do visit our website. There is, these are our handles, social media handles, and you can visit us. And every Thursday, before we end, every Thursday, we are going to continue with our session on miscellaneous laws, right? So see you guys soon in the next session. On the next Thursday, we'll take up a new topic. We're finished with intellectual property rights. Okay, thank you so much, everybody. Take care. Hasta la vista. Bye-bye.